Hi friend, good evening. Everybody who is watching me in everyday in fast Facebook, chat up also. I love you, everyone. Respectable elders, youngers, sisters, mothers, all of celebration. I'm going to every nice places like a garden also. This garden is situated Sector 88. There is a very nice place. This is a small cottage, but it is a very grounded decorated. There is peace, neat and clean. Everybody came here for enjoyment, enjoyable life. This cottage is very small, but here is cleaning very well. There is peace. Every big personality, vulnerable personality, come here for enjoyment with family. And here is a staff, very positive, very educated. Greeting is well, delivery is well. Only there is proceed vegetarian foods, snacks, nothing others. The food is provided to us positive mindset, nice creativity. Every big personality watching this place all together with your family. So you have to decide that and consider of your mind. Always looking this type place. Search. There is relief, no tense. Whole day you are getting a lot of tense. There is a very better relievable place. This cottage is set to 88 3,000. Everybody come here, enjoy. The beauty of nature, splendid, marvelous, super. No costly restaurant. 5 star is fail against of this cottage. Super civil, net and clean, enjoyable music, dedicated staff, honorable owner, delivery man is super. I want to say that everybody should be love from nature. If you want to love from nature, you should come here and enjoy. There is peace, livable place. Same this time, every big personality, club producer, writer, scientist, they have adopted this type and lead up a big project. They want to select livable place. So I want to say that please you have to select peaceful place of your life. There is no crowd. Your life means better growth. You have getting positive vibes, positive energy, and especially love from nature. You have to attraction always nature, law of attraction. Your mindset should be neat and clean. Your life growth, 100%. Splendid personality. Always you should be remember. You have to select nice people, nice company, nice atmosphere, and you have to adopt nice discipline, etiquette, and human. Every big personality also adopt this. If you want to improve of your life, so please implement
what I am saying, that try to understand. I am very happy when I come here, my friend, and just taking breakfast and snacks. There is no costly, but there is relief. Reliefable place. खूबसूरत. Please watch. Nature. Enjoy. Everyone. Every honorable person, big person, come here. Enjoy all together. This beauty is lead of our life. Etiquette. एक साफ सुथरी पारदर्शी खूबसूरती का मतलब ऐसे हम अपनी लाइफ को बनाते हैं जैसे एक छोटी सी चीज़, जिससे हमारे अंदर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग आता है, एक अच्छा एटीट्यूड आता है और हम लाइफ में बड़ी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आती है। यहाँ पे जो सफाई है, जो वातावरण है, बहुत रिलेटेबल है। हर बिग पर्सनैलिटी इसी चीज़ को सेलेक्ट करती है दोस्तों। चुन चुन के लाओ अच्छी चीज़ों को लाइफ में, तभी ग्रोथ होगी, तभी अच्छा माइंडसेट होगा, तभी आप किसी फ्यूचर का कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। आचार व्यवहार, गुण, तन, मन, एक अच्छा साथ, एक रिलीफेबल पैलेस, प्रकृति से प्यार, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन, ये लाइफ को बहुत आगे ले जाती है, बड़ी मजबूत पर्सनैलिटी बनती है और आपका मन साफ सुथरा। हर माता, भाई, बहन, बुजुर्ग हमेशा रिस्पेक्टेबल रहो, आदर करो, ऐसी स्पिरिट टाइम जाया करो दोस्तों, घर से निकलो। दिवाली आ रही है, सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर दिवाली फेस्टिवल, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम विक्रम सिंह जी। So there is a very nice place, Sector 88, the small cottage, but owner is decorated, marvelous, splendid, fantastic. Here is very nice, very relatable place. Try to understand what I am saying, that consider this matter. Follow. I always follow. Here is running small music, pray of God, beauty of nature. I love it. You are getting a lot of tense whole day of your business, job activities, and other scopes also. When you come here, getting a relief, tense, enjoyable. Your life is very important. Always respect of your life and others. You should be confident and respect front of any dedicated and honorable person. And respect any mother, sister, dedicated person. Always. This way is growth our life. And always accept happiness, santushti. Select. You don't go to more and more thinking about in future, because our life is only temporary. Our worth is zero. You have to calculate it zero into 10,000, 20,000, 50,000, 1 crore is equal to result is zero. So you should be enjoy of your life. I want to say that, and satisfied of your families, and you have getting finance only for satisfaction of your family, and the balance of your finance, growth of your future development. Always you think of your mind, but you don't bother of your mind anytime. Everything is temporary. Enjoy of your life.
Your life is valuable, so please enjoy your stress. You have to love of nature. You have to love any respectable person, respectable, honorable person, always. And अच्छा एटिकेट बनाओ, अच्छा शिष्टाचार लो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों को चुनो, खुशी और संतुष्ट हो, सकारात्मक दृष्टिकोण लो, नकारात्मक लोगों की साइड हटो, नकारात्मक सोच को निकालो, तभी जीवन की ग्रोथ है। अगर आपने ऐसा किया, ऐसा फॉलो किया, जो अच्छे लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं दोस्तों। उनका माइंड सेट ऐसे ही होता है, साफ सुथरी जगह में रहना, साफ सुथरी जगह पर चलना। कोई ज़रूरी नहीं है जितना आपके पास पैसा, यहाँ पे आओ, कोई पैसा जरूरत नहीं, एंजॉय करो, बट इस सुंदरता को निहारो, नेचर ऑफ ब्यूटी, पारदर्शी। जब यहाँ खूबसूरती है तो हम अपने इसी तरह अपनी लाइफ को बनाते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी का फ्यूचर ग्रो होता है दोस्तों। कहने का मतलब मोटा मोटा ये, बहुत से भाई होते हैं जो सुस्त, अच्छा टैलेंट है, मगर इन चीज़ों की खोज नहीं करते। अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करो, कल जो हो गया, अब अच्छा करिए। हर अच्छी चीज़ को चुन चुन के लाना, उसके पीछे नहीं भागना, उसको अपनाना, उसको ढूंढना, उसकी पारदर्शिता को जीवन में लाना, तभी दोस्तों आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा मैं इन चीज़ों को इसलिए दिखाता हूँ कि लोगों को कुछ अच्छा लीडर करो। हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे लीडर वाले लोग हैं, बिग पर्सनैलिटी, वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, चाहे कोई सेलिब्रिटीज हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हो, रिस्पेक्टेबल पर्सन। बहुत भाइयों को अवेयरनेस नहीं होती हमारे युवाओं को। तो मैं चाहता हूँ मेरे ये विचार बहुत आगे चले, ताकि लोग एक अच्छी लाइफ और खर्चा हमेशा अपनी पॉकेट के हिसाब से करें, जितनी इनकम, सिंपल लाइफ, साधारण लाइफ, मगर प्रकृति की कुछ सुंदर छटा और इंजॉयबल प्लेसों में टूर ट्रैवल जरूर जाया करो। ब्रेक लिया करो ऑफिस बिजनेस, तभी लाइफ इंटरेस्टिंग होती है। जीवन में जो कठिनाई आ रही है, जो मुसीबत आई, उनको सामना करो, उनसे खुश रहो। वो कठोर होंगे तो आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन बनेगी। वही लाइफ को नॉर्मल आप लोगों बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हमेशा फेलियर का सम्मान, अपनी प्रोफाइल पर पूरा फोकस करो, डरो मत, डर को फेस करना चाहिए। सामने वाला धोल है कुछ नहीं, बस रिस्पेक्ट दो, 100%। देखो दोस्तों क्या नज़ारा। थैंक यू, गुड नाइट, सेलिब्रेशन।